हेलो डियर स्टूडेंट। आज के हार्ड वर्ड से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। और शायद आप लोगों से ये गलती हो रही हो, मे बी। सो आप लोगों को करना क्या है ना, आप लोग क्या करते हैं कि एक बार ही आप लोग डिक्टेशन का वीडियो लेते हैं और एक ही बार आप लोग वॉच करते हैं, एक ही बार आप लोग डिक्टेशन लिखते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे ना तो आप लोगों को क्या होता है ना, आपकी जो डिक्टेशन है जो आप लोग का, वो इम्प्रूव नहीं होगा। इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा करने के लिए आप लोग को क्या करना है, मिनिमम आप लोग को 6 बार प्रैक्टिस करनी है। एक डिक्टेशन का आप लोग 6 बार प्रैक्टिस करना है उसका, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ये जो हार्ड वर्ड्स मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसको आप लोग 10 से 20 बार पहले बना लेंगे। उसके बाद डिक्टेशन आएगा, आप लोग को क्या करना है, 6 बार रिपीट करके आप लोग को डिक्टेशन को ले लेना है। यानी आप लोग अगर 6 बार डिक्टेशन को आप लोग लेते हैं तो 2400 वर्ड होता है। और आप लोग हर एक आउटलाइन, हर एक वर्ड को आप लोग 6 टाइम बना रहे हैं। यानी आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगर आप 6 बार बनाते हैं तो आप लोगों का खुद ही, आप लोगों को खुद ही लग जाएगा कि बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो आप लोगों से बनने लगेंगे। पहली बार मैटर लेने पे क्या होता है कि वर्ड कुछ वर्ड छूट जाते हैं। दूसरी बार में क्या होता है, जो वर्ड छूट रहे हैं वो बन जाते हैं। इसी तरह आप लोग अगर 6 बार करते हैं ना तो आप लोग का जो डिक्टेशन जो आप लोग को छूट जाता है वो आप लोग को कम छूटेगा। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यही करेंगे, मिनिमम आप लोग 6 बार तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, तभी बेनिफिट मिलेगा। सो हार्ड शॉट में बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको 10 से 20 बार आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओवरसाइट्स, इनकन्वीनियंसेस, स्टेक होल्डर्स, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, वनरस, डाइल्यूटेड, लाइबिलिटी, एंटी टेररिज्म, इम्प्लीमेंटेड। सो आज की ये हार्ड्स वर्ड हैं, आप लोग उसको 10 से 20 बार आप लोग उसको प्रैक्टिस करिए और इसके बाद आप लोग डिक्टेशन लीजिए। रेडी, स्टार्ट। मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन, I am extremely grateful to the honorable members who have spoken. In fact, it is very rare, as I said, that law made in 2013 has to be reviewed because it is an act with 470 sections. Therefore, a lot of representations had started coming in the moment this act was notified. There were some drafting oversights because it is a long act, plus some inconveniences were felt when the act was being implemented. We therefore held consultations with all stakeholders and we were able to identify several points which required to be revisited. Some of those points were revisited by virtue of notifications or even under rules. For example, one of the issues that my friend from the opposition has raised is with regard to a large number of private limited companies and the provision of very onerous nature being made applicable to them. Now, by virtue of a notification, it was possible to give private limited companies exemption from some of those provisions, and therefore those exemption notification have been given, and the pain of some of those provisions has been diluted by that particular process. Now, I was initially able to shortlist 14 amendments, and then 2 more have been added for after the bill was passed in the Lok Sabha.
provisions have to be brought in line with the international standards. Now, the question asked is why are we in a hurry? As I rightly mentioned by some honorable members, people are finding it extremely inconvenient after this legislation to comply with all the provisions, and therefore they are finding out devices of not forming a company and going in for other devices, including a limited liability partnership. People are thinking whether it will be a better option to do business rather than a company registered under this act itself. For example, you look at subsection 6 of section 212. For some reason, we have to be careful of this whole process. About 4 years ago, even in the Customs Act, this provision was brought in. So, a provision for bail, which was considered very onerous even for anti-terrorism law, is brought in for violation of the Companies Act. So it was earlier brought in under the Customs Act. When I had pointed it out to the then Honorable Finance Minister, he withdrew it being an onerous provision. Stop.